Namaskar to everyone. So today we are going to discuss about the various definitions of yoga according to Vedas, Upanishads, Puranas, Darshanas, Bhagavad Gita. So we'll try to understand the different definitions of yoga. आज हम योग की परिभाषाओं के बारे में समझेंगे, उसको जानेंगे. अब ये परिभाषाएं वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, भगवद गीता में योग को किस तरह से परिभाषित किया गया है इसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले डेफिनेशन की. युज्यते अनेन इति योगः. योगा इज़ दैट बाय विच यूनियन इज अचीव्ड. तो योग वह मार्ग है जिससे आप अपने आराध्य के साथ एक हो सकते हैं, है ना. सो योगा इज दैट बाय विच यूनियन इज अचीव्ड. सो इफ यू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप पाथ ऑफ योगा, you can get united with the object of meditation or whichever is your aim of the sadhana. योग वह प्रक्रिया है जिससे आत्मा और ब्रह्म का मिलन होता है. Now in Vedas, yoga is defined as the means of union, especially the union of individual consciousness with the supreme consciousness, which is the main source of all the individual consciousness. Now let us go to the next definition. Yujyate manasa yogam. So here Vedas they explain, by the mind one should practice yoga. मन से योग का अभ्यास करना चाहिए. What is the meaning of by the mind one should practice yoga? Because yoga's main impact is on the mind. So without involving your mind, without involving your mental strength and energy, if you practice yoga, you are not going to get success. You are not going to get connected with your own self. You will not be able to get established in your own self. So you should always practice yoga with your mind. देखिए, मन का बहुत ही ज़्यादा अहम मतलब रोल कह सकते हैं योग में माना जाता है. और अगर आप योग की साधना करते हैं और वहाँ पर अपने मन को साधते नहीं हैं और बिना मन के साधना को करते हैं, तो आप साधना में सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकते. दिस वर्स एम्फसाइजेस द इनर प्रैक्टिस ऑफ मेंटल फोकस एंड कनेक्शन एज द पाथ ऑफ योगा. नाउ नेक्स्ट श्लोक इज तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय. So what is the meaning of this shloka? Knowing that Supreme Brahman, one transcends the death. There is no other way to liberation. So what is the meaning of liberation? Liberation does not mean that you have to die for that. Liberation means you are free from all the attachments of your life. You are free from the circle of life and death. So when you will be free, you can be free from all these things when you merge with the object of meditation or when you experience the Supreme Brahman. तो उस ब्रह्म को जानकर ही मृत्यु के पार पाया जा सकता है. अगर उस ब्रह्म को आपने समझ लिया, आत्मसात कर लिया, तो आपने मृत्यु को जीत लिया. और यही एक उपाय है योग पर अपने आप को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए. सो नोइंग दैट सुप्रीम बीइंग वन ट्रांसेंड्स डेथ, देयर इज नो अदर वे टू लिबरेशन. योगा इज सीन एज द ओनली पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंस फ्रॉम डेथ एंड बॉन्डेज. तो योग ही वह मार्ग है जो आपको उस ब्रह्म तक पहुंचा सकता है और इस कर्म के बंधनों से आपको मुक्ति भी दे सकता है. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन. सो दिस डेफिनेशन इज फ्रॉम द निरुक्त. तो यहाँ पर क्या कहते हैं? युजिर योगे. द रूट युज मीन्स यूनियन और टू ज्वाइन. युजिर योगे. तो युज क्या है? युज इज यूनियन और टू ज्वाइन. सो what is intended to join here? Union between Atma and Paramatma in all the states of mind is called yoga. युज धातु का अर्थ है जोड़ना या मिलना.
तो आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है वह योग है. So the word yoga comes from the Sanskrit root yuj, meaning to unite particularly with the supreme consciousness. Now next shlok is yogena manasi manah pragyaya pragyam atmani mahato samadho. So in Upanishads, one of the Upanishads, this is explained. Through yoga, the mind is united with wisdom and self. So by the practice of yoga, by practicing all the 8 limbs of yoga or whichever path you are following, all the wisdom and self is realized. You get the power to understand what is reality, what is truth, and you get established in your own self. So योग के माध्यम से मन, प्रज्ञा और आत्मा में एकता आ जाती है. आपकी जो भौतिक इंद्रियां हैं उसके परे जा कर के आप अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को अपनी साधना के द्वारा साध करके आपके अंदर एक दिव्य ऐसी प्रज्ञा जागृत होती है जो आपको केवल शुद्ध सत्व रूप में ही जो शुद्ध विशुद्ध ज्ञान है वही आपको बताती है, दिखाती है. सो द वैदिक वर्ल्ड व्यू सीज योगा एज ए टूल टू एलिवेट द माइंड एंड यूनाइट विद द सुप्रीम इंटेलिजेंस इन द सोल. तो हमने देखा कि वेदों का अपना एक अलग परिभाषा है, लेकिन वेदों में भी योग के बारे में बहुत सी बातें होती हैं. तो अब आगे देखते हैं उपनिषदों में योग की परिभाषा क्या है. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योगा इन उपनिषद्स. सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज योगा इज द स्टिलिंग ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द माइंड. सो कठोपनिषद explains that मन की गति को रोक देना ही योग है. So by the practice of dharana, dhyan and samadhi and pratyahar, you are able to control the fluctuations of your mind by following abhyas and vairagya, by uninterrupted practice, and once you are firmly established in your practice, you stop the mental fluctuations, and that is called yoga. कठोपनिषद कहता है when the 5 senses and the mind are still and the intellect is not active, that is the highest state. So when all the 5 senses are under control, when mind is still, it is calm, and intellect is also calm, it is not active, so that is a highest state of balance, you can say. सो जब इंद्रियां, मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, उसमें कोई कोलाहल नहीं होता, वही परम स्थिति है. मुंडक उपनिषद कहता है सर्व द्वारेषु देहे अस्य प्रकाश उपजायते. सो व्हेन योगा डॉन्स, light radiates through all the gates of the body. So when you start yoga, when you go beyond the cell, when you go beyond the atoms, when you go and get connected with your essence, with your own self, there is only light, there is only purity, there is only knowledge. So a yogi emits radiance when they are established in union and knowledge. Then Bhagavad Gita talks about Atma Samyam Yoga, which is also explained in Upanishads. So yoga is a process of self-restraint and self-realization. So what yoga is? By practicing samtosha, by practicing aparigraha, by practicing different yamas and niyamas, by practicing asteya, you gain control over your sensory cravings. So once you start doing this, you reach the state of self-restraint, and by practicing other stages of yoga or steps of yoga, definitely you can realize the ultimate self. So yoga is the path of fire leading to immortality. श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है कि योग वह अग्नि है जो अमरत्व की ओर लेकर जाता है. So normally all the agnis take you
towards the death, or once you meet the Agni, you are already dead. But this is the only Agni which you takes you towards the immortality. By practicing yoga, you can realize your own true self. So now let us see the definitions of yoga in Puranas. So विष्णु पुराण में कहा गया कि योग इज द पाथ टू लिबरेशन. विष्णु पुराण कहता है कि योग ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे आपको मुक्ति मिल सकती है. So Puranas uphold the yoga as divine path that leads to the soul, that leads the soul to its ultimate freedom. Through yoga the mind becomes calm and soul shines. So शिव महापुराण क्या कहता है कि योग से मन शांत हो जाता है और आत्मा चमकने लगती है. योग से आप अपने स्वरूप को जान सकते हैं और अपने स्वरूप स्थिति में वापस स्थापित हो सकते हैं. योगा इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ प्राण एंड अपान. लिंग पुराण कहता है कि योग क्या है? प्राण और अपान वायु का एकीकरण है. फिर उसके बाद भागवत पुराण में कहते हैं, व्हेन ए योगी कंट्रोल्स ऑल हिज सेंसेस ही बिकम्स वन विथ नारायण. नारायण. सो जब योगी अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लेता है, वह नारायण में लीन हो जाता है, वह ब्रह्म में लीन हो जाता है. योगा डिस्ट्रॉयज द इम्प्योरिटीज ऑफ माइंड एंड लीड्स टू द रियलाइजेशन ऑफ गॉड. देवी भागवत क्या कहता है? योग मन के दोषों को नष्ट करके ईश्वर की साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है आपको. देवी भागवत में कहा गया है कि प्यूरिफिकेशन एंड डिवाइन यूनियन इज अचीव्ड व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा. अब हमारे जो दर्शन हैं, वो दर्शन जो हैं वो योग को किस तरह से देखते हैं? तो वी ऑल नो, हमें मालूम है कि द मोस्ट प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ योगा इज योगश्चित्त वृत्ति निरोधा. सो योगा इज अ कंप्लीट इनहिबिशन और cessation ऑफ मेंटल or the mental fluctuations which occur at the level of consciousness. So yoga is complete cessation of mental modification. So classical yoga is about stilling the fluctuations of the mind to see the reality, the ultimate truth. Then Maharishi Patanjali says, tada drashtu swarupe avasthanam. Then the seer is established in his own true nature. Once all the mental fluctuations are totally controlled or calmed down and your consciousness is still, then you are purely established in your own swarup. So when mental activity ceases, the self is realized. Sankhya provides theory, yoga provides method. So Sankhya is nothing but it is theoretical part of the practical aspect of yoga. Yoga is a discipline for attaining liberation through self-purification. So, दर्शन ये भी कहते हैं कि योग आत्मशुद्धि का एक रूप है और आत्मशुद्धि के माध्यम से भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं. तो आत्मशुद्धि के लिए आप अष्टांग योग का पालन कीजिए, आपको फल अवश्य मिलेगा. यम नियम टू समाधि फॉर्म द 8-fold पाथ. तो अष्टांग योग हम सभी को पता है, वी ऑल नो. सो योगा इज नॉट जस्ट द पोस्चर बट इट इज अ सिस्टमिक डिसिप्लिन ऑफ ऑल द 8 limbs. सो इफ यू फॉलो ऑल द 8 limbs, then you can say you are practicing yoga. Now let us go to the next part, Bhagavad Gita, the very important part which talks about the definition of yoga. So Gita talks samatvam yog uchyate. Yoga is equanimity of mind. So when all the mental fluctuations of your consciousness is completely still, it is in a state of equilibrium, it is balanced totally. That state is called yoga. So balance in success and failures or in pair of opposites of anything is called yoga. Then Bhagavad Gita also says योगा कर्मशु कौशलम. सो कर्म की कुशलता जो है वो योग है. द स्किलफुल एक्शन विदाउट एनी अटैचमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्रूट इज ऑल्सो कॉल्ड योगा. सो राइट एटीट्यूड इन एक्शन इज कॉल्ड योगा.
Then Bhagavad Gita says, Tameva Sharanam Gacha Sarva Bhavena Bharata. Surrendering fully to the divine is also called yoga, which is explained in Yoga Sutras Ishwar Pranidhan. So here he says, Bhagavan Krishna, surrendering everything to him also is a form of yoga. So Bhakti Yoga is total surrenderance of ego on the lotus feet of Supreme Divine Father. Then next, how he explains, Jnana Vijnana Triptatma Kutastho Vijit Indriya. So he says the self-satisfied yogi is stable and conquered his senses. So the person who is self-satisfied, जो अपने आत्म में संतुलित है, संतोष जिसके अंदर है, वह स्थिर भी है और उसने अपने सभी इंद्रियों पर पूरी तरह से वश कर रखा हुआ है. तो knowledge, control and contentment is the mode through which you can define a yogi. A yogi will be knowledgeable, he will be contented, and he will be under the control. So he will have control over his all the senses. Then next explanation is Ananyas Chintayanto Mama Ye Jana Paryupasate. So what he says, those who worship me, who is telling here? Bhagavan Krishna is telling here, those who worship me with unwavering devotion, I protect and provide for them everything whatever they want in their life. So faithful devotion to the Supreme Divine Self is also a very strong path of yoga, which is Bhakti Yoga. So these are some of the definitions which talk about the definitions of yoga, which is explained in the Vedas, which is explained in the Puranas, which is explained in the Darshanas, in Bhagavad Gita. There are numerous definitions, there are numerous explanations of yoga, but remember, what is most important for us is the practice. Yoga is not about reading the definition. Yoga is about understanding the definition and practicing it. When you understand what is yoga, union between Atma and Paramatma, what is Chitta, it is your consciousness. Vritti, it is the Swabhav, or it is the nature of that consciousness, which is basically the Manas. Then comes the Nirodha, total cessation. So basically it is the nature of your consciousness, and this nature is nothing but your different forms of mental modifications. So when you totally control the different forms of your consciousness, automatically you are in a state of oneness with your object of meditation. And this can be achieved only when you start practicing sincere yoga, when you start doing sadhana under the proper guidance. So this is all about the definitions of yoga. I will come with more details, more explanations about yoga. Keep watching the full video and keep subscribing, because if you don't subscribe, you are going to miss a lot of information.